So basically, it is a non-directive form of talk therapy, Rogerian therapy, or client-centered therapy, or person-centered therapy, or you can say counseling. जहाँ पे you will act as an equal partner in the therapy process or counseling process, and your counselor or maybe your therapist will remain the non-directive. Why? Because he or she will not going to pass any judgment on your feelings, your propositions, your dispositions, or offer any sort of suggestions or solutions to your problem. So basically, this uh, counseling, you can say, or this approach, human person-centered approach of counseling, was developed by the humanistic psychologist Carl Rogers ड्यूरिंग 1940s 50s के टाइम पे उन्होंने ये दिया था, and he was regarded as one of the most influential psychologists of 20th century. अगर आप उसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को पढ़ेंगे, then you will find that he mentioned that people are the best expert of their own lives and experiences. And he also talked about the self-actualization tendencies. Why? Because as he mentioned in his theory, like we are the expert of our own experiences, so we have that capability, we have that potential to achieve our fulfill potential and become the best as we are or we can. तो बताइए आप लोग इस थेरेपी में क्या होता होगा, मतलब that is a philosophy behind this counseling approach or therapy basically. So what do you think, how this therapy gonna work? So basically this therapy is intended to allow the client to fulfill that potential. That potential means self-actualization tendencies by relying on his own strength to change his behavior, feelings, thoughts. So Rogers come up some basic elements of this therapy. As you have mentioned that in this approach, the therapeutic environment or the counseling environment should be comfortable, non-judgmental, and empathetic. और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कुछ बेसिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो है जेन्यूननेस, जब आप खुद जेन्यून हैं, जेन्यूननेस एंड कंग्रेंस. सेकेंडली, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एंड द लास्ट इज empathetic understanding. So these three are the basic key components of client-centered therapy to achieve a very comfortable, non-judgmental, and empathetic environment throughout the counseling process. If you use these three techniques like genuineness, congruence, and unconditional positive reward,
मतलब basically this technique will help the client to grow psychologically very well and become self-aware, and he or she tend to change his behavior via self direction only. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्लाइंट को बहुत सेफ फील कराएंगे, सिक्योर फील कराएंगे, कंफर्टेबल फील कराएंगे, तो डेफिनेटली जो आपका क्लाइंट है वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप कर लेगा, उसको सेफ फील होगा. And he's the first one who use the term client rather than patient. ऐसा उसने क्यों किया होगा? Any idea why Rogers changed the term from patient to client? सर हो सकता है सो दैट अगर आप किसी इंडिविजुअल को पेशेंट कर कह के जब एड्रेस करते हो तो समटाइम्स अगर वो ठीक भी है तो वो अपने आप को एज अ पेशेंट ही कंसिडर करने लगता है. तो अगर हम सही भी हैं और हमें कोई अगर हम सही नहीं भी हैं और अगर हमें कोई इंडिविजुअल या कोई क्लाइंट कहता है तो भी मतलब हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, हम पेशेंट हैं लाइक दैट. Right. See, patient implies that you are sick, right, and you are here to यस. some for some cure from a therapist or the counselor. But when we सर एक use the चीज़ समझ नहीं आई यहाँ पर, ये Mhm. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो आप बोल रहे हो, इसमें काउंसलर का काम होता है कि बंदे को मतलब क्लाइंट को सेल्फ रियलाइजेशन करवाना, उसको Right, उसके अंदर की पॉजिटिवनेस दिखाना. right. ओके. I'll come on that part. ओके. जैसे कि मैंने तीन तीन चीजें बताई थी, जेन्युइननेस एंड कनकरेंस. क्या होता है जेन्युइननेस एंड कनकरेंस, आप क्या समझते हैं? सर ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझ नहीं आया कि जेन्युइननेस और कंकरेंस में. So basically, this therapist or the counselor who is practicing this client-centered therapy, so basically they tend to display the genuineness and the congruence with their clients. ओके. ओके. है ना? इसका क्या मतलब होता है? मतलब सर कि जो हमारा मतलब सपोज जो काउंसलर है ही और शी इज़ वेरी मच जेन्युइन टू अस, ताकि हम उसके संग खुलकर सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ और तभी वो हमें समझेगा हमारी प्रॉब्लम्स को और तभी वो हमें क्योर कर पाएगा. आई थिंक सो ऐसा कुछ होना चाहिए. राइट. सी, अब बिल्कुल ठीक बोला. मतलब दिस मीन्स आपका क्या बोलते हैं, genuineness and congruence basically allow you to act in accordance with their thoughts, feelings, allowing them na to share openly and honestly. यस सर. But this requires self awareness ओके. and realistic, मतलब एक realistic understanding होनी चाहिए, like about your experiences, about your thoughts, about your feelings, about your socialization process. तो सर ये सेल्फ अवेयरनेस जो क्रिएट कर रहा है वो भी काउंसलर का ही काम है ना, जो सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करेगा हम्म. इंडिविजुअल के अंदर. ओके. और जब आप जेन्युइननेस और कॉन्फिडेंस शो करते हैं बेसिकली अपने क्लाइंट को, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू क्रिएट अ सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट. यू और थेरेपिस्ट और क्लाइंट, आप दोनों के बीच में एक अच्छा एक सिक्योर इन्वायरमेंट बनता है, और जैसे कि एक अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो पाता है दोनों के बीच में, जिससे कि आपका जो क्लाइंट है वो फील सेफ करता है. यस सर. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवॉर्ड मीन्स एज Said the एज counselor has to accept the client unconditionally and non-judgmentally. यस, unconditional positive reward regard means like you are always accepting like who the client is. अब जो भी है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसके फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को,
हम्म? अगर वो कुछ भी आके आपसे शेयर करता है, like whatever he or she is experiencing, if he is sharing with you, then definitely you accept all his thoughts, feelings without any judgment. Whether the client express positive feelings uh, or negative feelings. So you just need to listen actively and maintain the eye contacts with a positive body language in the entire session without judging your client. Or empathetic understanding. We So should understand the yes, feelings understanding and the of the feelings. client. Yes, understanding the feelings of your client. So you are seeing his thoughts, pictures or feelings from his own उसके खुद के पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं. So you will act as a mirror of his or feelings and thoughts. So basically, with the help of these three important techniques, you can do a client-centered therapy or the counseling with the person with different problems. स्पेशली एंजाइटी के प्रॉब्लम है तो आप थेरेपी यूज कर सकते हैं. डिमेंशिया, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, पीटीएसडी, साइकोसिस. इन दीज प्रॉब्लम्स दिस client therapy or client centered therapy works very well. So basically this client centered therapy will help the client to adjust his or her self concept in order to achieve the congruence. और आप इसको देखेंगे, the entire theory of humanistic approach focuses on developing the self-actualization tendencies. So with the help of client-centered therapy also, as a therapist, you work with your client to focus on how he or she will reach to a more realistic view of himself and the world. ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. What about the couple therapies? कपल थेरेपी क्या होता है? I think you must have heard about this term many times, couple therapy. Although it is a form of a psychotherapy that will help you and your partner improve with the relationships basically. Hmm? So basically this kind of therapy helps in relationship difficulties. हाँ, बताइए क्या होता है कपल थेरेपी? एनी आइडिया अबाउट कपल थेरेपी? सर बेसिकली ये जो कपल थेरेपी है ये जैसे मैरिज काउंसलिंग या फिर फैमिली काउंसलिंग से रिलेटेड होती है हाँ, एज ठीक है. आई थिंक, हम्म. जिसमें सपोज जो भी दो पर्सन हैं, कपल्स हैं, उनके बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो दोनों को किस तरीके से काउंसिल करना है, जो मुझे समझ में आ रहा है. आई थिंक ऐसा ही कुछ होना चाहिए इसके अंदर कि दोनों को काउंसलिंग के थ्रू एक सही डायरेक्शन देनी है. ओके. एनीथिंग एल्स?
See, the basic philosophy behind the couple therapy is the object relation theory. आपको पता है object relation theory? Any idea about object relation theory? नो सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है, ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी क्या होती है? So basically, this theory is centered on our internal relationships with others. तो अगर इस theory को पढ़ेंगे, then you will find that our lifelong relationship skills are strongly rooted in our early attachments with our parents, especially our mother. So in this object relation theory, the object is basically a people or physical items that symbolically represent a person. So basically according to this theory, like how you आपके जो बचपन के जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं with regard to the relationships with your mother, father or the other, ना आप कितने अटैच थे और किस तरीके से चीजों को देखते थे. So basically in this theory, the entire emphasizes on the early relationships, the way mother and infants interact. The interaction play a crucial role in the development of a child and his other skills. अगर मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली चाइल्ड विल आल्सो डेवलप देयर ट्रू सेल्फ. होता है नहीं होता है. हम अगर आप ये देखेंगे, ऑल्दो मतलब इट इज ऑल वन ऑफ अ काइंड ऑफ साइको डायनामिक और साइको अप्रोच टू डेवलप द पर्सनालिटी. जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, लाइक व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो या मतलब आपके जो ये हैं पोटेंशियल स्ट्रेसर्स हैं, तो उसमें आपका हम बात करते हैं बार बार होम एनवायरनमेंट की, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की. तो जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है वो क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इन द ईयर अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स. आप सबको पता होगा कि अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स? अच्छा आप ये बताइए चलिए. हाँ, सर कैरेक्टर एंड बिहेवियर फॉर्मेशन तो उसी टाइम पे होता है. कैरेक्टर और बिहेवियर फॉर्मेशन उसी टाइम पे होता है. और सर फर्स्ट 5 ईयर के अंदर माइंड डेवलपमेंट भी, मतलब फर्स्ट 5 ईयर में चाइल्ड का ओवरऑल माइंड डेवलपमेंट होता है, जिससे मतलब उसका माइंड का डेवलपमेंट होना होता है. माइंड का डेवलपमेंट होना. और सर एक मॉरल डेवलपमेंट जो होती है वो भी अर्ली चाइल्डहुड में मदर फादर से या पेरेंट्स जो हमारे गार्जियंस होते हैं उनसे ही मिलती है. मॉरल डेवलपमेंट या एक जो एक सिक्योरनेस होती है कि जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है, सराउंडिंग में अगर उसके मदर फादर हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करता है. see, early childhood years are very important from the perspective of child development. बच्चे का सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, these in this year first of all the entire 90% of the brain develops in these years, right? Secondly, बच्चे का बाकी के जो इमोशंस हैं, अब इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है इन दीज ईयर्स में, अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में. अगर if the child is getting very stimulus environment at home, डेफिनेटली उसका जो लेटर लर्निंग आउटकम्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं.
क्यों हम फोकस करते हैं कि लाइक वी हैव टू, जितना आप अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में इन्वेस्ट करेंगे उतना कम आपको बाद में, उतना अच्छे रिटर्न्स आपको बाद में मिलेंगे। इसीलिए अगर हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हम इमोशंस डेवलप करते हैं या जो रिलेशनशिप स्किल्स डेवलप करते हैं, सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं ड्यूरिंग दीज ईयर्स, वो हमें लाइफ लॉन्ग आगे तक हेल्प करता है हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में। अगर आपके बचपन के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आपके अटैचमेंट्स मतलब अपने आपके मदर से, आपके फादर से, आपके सिबलिंग से, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बना के रखा है, तो आप लाइफ लॉन्ग आप रिलेशनशिप्स आप जो भी बिल्ड करेंगे वो आप ये देखिएगा कि आपके वो अच्छे ही होंगे। So that is the philosophy behind the couple therapy, like how, so couple therapy is also talk about the importance of relationships. So basically in this kind of counseling or therapy, the therapist deal with the relationship difficulties or relationship issues, maybe conflict, feeling of disconnect, maybe the some affairs, or maybe the issues related to the sex, or maybe related difficulties maybe due to the external stressors. It might be workplace, it might be like extended families, or it could be anything. और आप देखेंगे कि मतलब in last 10 years this kind of problems have been increased very drastically. And there are different forms of couple therapy. Like one is emotionally focused therapy, psychodynamic couple therapy, behavioral therapy, cognitive behavioral therapy. इसमें कैसे काम करते हैं, like what are the techniques as a counselor or as a therapist you think will work, like what would be the strategies you will use to counsel a client with the relationship issues? बताइए। So first we try to understand their unconscious feelings, unconscious desire. There are some strategies. मतलब as a counselor you must employ on the people who will come for the couple therapies. Like knowing the client, identify the feelings, you have to explore the past, focused solution, focused on solutions. Sometimes you need to teach the skills to manage some problems like anger management problems, conflict resolution skills and all. क्या बेनिफिट्स है कपल थेरेपी के? डू यू थिंक मतलब दिस कपल थेरेपी विल मतलब हैव एनी बेनिफिट्स?
couple therapy will help the client to understand each other in a better way. Sometimes couple therapy will help the couple or the client identify the relationship issues कि आखिर प्रॉब्लम क्या है. और प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम बहुत छोटी छोटी होती है. समटाइम्स इट माइट बी अ फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन और इट माइट बी अ फीलिंग ऑफ लाइक सम कॉन्फ्लिक्ट्स, रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. अब कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घरों में, और वो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़े जाते हैं. समटाइम्स लैक ऑफ ट्रस्ट. It will help to improve the communication skills between the partners. आजकल तो लाइक इट्स वेरी कॉमन, लाइक घर में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी सब अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं. लाइक नोबडी इज रेडी टू टॉक. एवरी पर्सन इज बिजी इन देयर ओन लाइफ. होता है कि नहीं होता? मैं बहुत बार देखता हूँ जनरली, मतलब सम केसेस, कुछ केसेस आते हैं तो उन केसेस में दैट्स वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, द हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोबाइल एंड now WhatsApp and all creates a lot of problems between the couples. उनकी यही शिकायत होती है कि सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते. Why? Because they both are equally busy in their mobile phones. So what you're saying is absolutely right, because nowadays we are socializing more on virtual platforms rather than socializing in person. And that is because in virtual world nobody is contesting. We are trying to find the good things about what people are portraying to us. This is not the real face of people that we get to see. It is only the good part of the people that is being projected virtually. Yes, and that is why the problems are arising like anything. इसलिए तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज इसलिए तो बढ़ रहा है. Nowadays in the youngsters and the youth, it's a very common problem that like anxiety, depression and all. Why? Because of the Instagram, because of the Facebook. और क्यों है कि सर बस हमें अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाना है, दूसरों से मतलब एक दिस काइंड ऑफ अ कंपटीशन बिटवीन विद ईच अदर, लाइक कि हमें इंस्टाग्राम पे या मतलब ट्विटर पे या इस पे मतलब देयर इज अ वर्चुअल वॉर गोइंग ऑन. आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट. Sir, even parenting has become difficult nowadays. Right? So even to even to Even your own child, making them understand the pros and cons of all these social media, virtual platforms, and this is becoming really difficult to handle. apart from this, and like even the now parents are like giving the gadgets to the very young children. Apart from that, like now parents don't have time to look after the child's needs and all. अभी 2 हफ्ते पहले की बात है. I was in the metro. So just मेरे सामने ही एक मदर और एक उनकी डॉटर बैठी हुई थी, and like daughter was crying like anything. So and she was just asking कि मम्मा मुझसे बात कर लो, मम्मा मुझसे बात कर लो. And उसकी जो मदर है वो कंटिन्यूअसली she was playing a game on mobile. मैं उनको आधे घंटे तक देखता रहा, and like she was crying for half an hour and the mother was busy in her mobile. So and I don't understand like how, मतलब किस तरफ, मतलब क्या किस तरीके से मतलब हमने अपने आप को लाइक एक एडिक्शन में डाल दिया है. सो जिसका खैर बहरहाल ये मतलब एक चिंता का विषय है. So couple therapy or marriage counseling basically helps to resolve the conflict between the partners, and it will strengthen the attachment between the partners. Sometimes couple therapy or marriage therapy helps to learn new skills, improve the relationship satisfaction and all.
although it is very effective sometimes. So what I feel now, this exposure is also increasing where couples are coming forward to take those counseling sessions as well. They understand the problem that yes, we need some advice or we Mhm. need some intervention from a professional. That professional advice and help is sought nowadays. Earlier, it used to be a stigma. If you want to get counseled and you want to take any kind of psychiatric help or mental issues, that used to be a big stigma earlier. But nowadays it's very common, and now it's become a fashion. Like we have a therapist, we in the, and now we are in therapy, and we are now it's a therapy. मतलब एक पूरा वो बन गया है, एक पूरा एक स्टेटस को वाली बात हो गई है. खैर, ठीक है. कपल थेरेपी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the last one is eclectic therapy. Eclectic therapy क्या होता है? Any idea? Eclectic therapy. तो ये इज इट के जैसे सारी थेरेपीज का कुछ कुछ पार्ट, लाइक इट इज नॉट फिक्स्ड थेरेपी बट इट मे इन्वॉल्व डिफरेंट थेरेपीज. Yes, absolutely right. It is not a therapy, but rather than it's a mixture of all the therapies. And sometimes हम इसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी बोलते हैं, मल्टी इंटीग्रल अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी बोलते हैं. So, like depending upon the situation, you can pick the type of approach that you want to integrate in the ongoing sessions or in the Yes, situation. absolutely right. So basically, eclectic जो therapy है, it's an approach that draw on multiple theoretical orientations and techniques. So basically, it allow the therapist to use the most effective methods which are available, or which the therapist knows to address the client's needs. Sometimes it is also known as multi-modal or integrative therapy also. बहुत तरह की होती है eclectic therapy, like आपका brief eclectic therapy, cognitive interpersonal therapy, multi-modal therapy, trans-theoretical therapy. Brief eclectic therapy क्या है? Any idea? Brief eclectic therapy. So basically, in this therapy, it incorporates the aspects of psychodynamic and cognitive behavioral treatment that will apply to a limited number of sessions. And this approach is best used in the cases of PTSD. Cognitive interpersonal therapy, it helps the people to understand their own thoughts, emotions, feelings. Multimodal therapy basically works on the social cognitive learning theory. अब इसमें जो जितने भी अगर मैं बात करूं इसके टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स में आपको लाइक यू कैन मेंशन ऑल दी पॉसिबल थेरेपीज लाइक बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, डीबीटी, पर्सन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी. ये जितने भी हमारे साइकोथेरेपीज हैं वो सब इसकी टेक्निक्स हैं. अगर आपको लगता है, मतलब ड्यूरिंग द सेशंस, इफ यू फील दैट इन दिस सिचुएशन द बेस्ट रेमेडी which can work here is psychodynamic, then you will apply psychodynamic. आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी ज्यादा अच्छा काम करेगी, देन यू नीड टू अप्लाई बिहेवियर थेरेपी. आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कॉग्निटिव थेरेपी को यूज करने की जरूरत है, तो इन दैट केस यू कैन यूज कॉग्निटिव थेरेपी.
So it is a kind of an integral approach, an integrative approach to deal with the client's problem. And this approach basically helps the client with various problems like anxiety, bipolar disorder, depression, eating disorder, personality disorder, आपका PTSD का, relationship problems, आपका social issues, stress, सब में काम आता है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, इसमें जो मतलब जो चीज है, जो ध्यान रखने की बात जो है, एज अ थेरेपिस्ट और एज अ काउंसलर यू शुड बी ट्रेन्ड इन ऑल दी थेरेपीज. आपको सीबीटी भी आनी चाहिए, आपको बिहेवियरल थेरेपी भी पता होना चाहिए, आपको साइकोडायनेमिक थेरेपी भी आनी चाहिए, आपको आपका ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी आनी चाहिए. अगर आपको सारी थेरेपीज आती होंगी तभी आप जो बेस्ट सूटेबल होगा वो आप यूज कर पाएंगे. ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत है थोड़ा सा. आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. थैंक यू सर. Sir, I checked last time. कल का session, sir, online. Will it be possible to attend if you are not able to come to for the face-to-face session? ऑनलाइन Sir, ऑनलाइन तो नहीं होगा, मतलब ये ऑफलाइन, कल ऑफलाइन है ना हमारा सारा. sir, that's what I asked. Okay, can meeting can be created there and we can hear to what is being covered in the face-to-face session? Is it possible, sir? I don't think so. Like if it is recorded, then definitely you will get the recording. Available in the timetable for tomorrow as well, online session 10 to 12. सर इंटर्नशिप फाइल पे आप ही साइन करोगे ना? यस, मैं ही साइन करूंगा. सर कब करोगे फिर? आप कल ले आइए, कल ले आइए, मैं कल साइन कर दूंगा, चेक कर दूंगा सबका. द थिंग इज कि जब ये हमारा लास्ट फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हुए थे तब मैंने रेफरेंस लेटर लिया था एंड उस टाइम दूसरे सर थे हु वाज टेकिंग आवर क्लासेस, तो मैंने उनसे वो रेफरेंस लेटर जो था वो साइन करवा लिया था. आई होप इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, या दोबारा से करवाना पड़ेगा मुझे? आपके वो कौन है, एकेडमिक काउंसलर कौन है? सर वो उस टाइम जो वहां पर जो एक सर बैठते हैं उन्होंने कहा था कि जो आपकी क्लास ले रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं, यू कैन खगेंद्र सर थे उस टाइम, ही टुक आवर क्लासेस, तो उनसे ही मैंने साइन करवा लिए थे. बट अच्छा, एज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले आना. ठीक है, ठीक है. 2 o'clock तक अवेलेबल होंगे फिर कल आरसी में. हिंदू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर कल आप 2 o'clock तक अवेलेबल होंगे आरसी में. हाँ हाँ, और सर हमारा तो विशाल सर ने किया था जो उधर बैठते हैं रेफरेंस लेटर पे साइन. हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, आपने फाइल बना लिया, आप अपना फाइल ले आना. ठीक है, कोई इशू नहीं है. सर फिलहाल बाइंड नहीं करवाया, इन केस कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आपसे चेक करवा के करेक्शंस करके फिर बाइंड करवा लेंगे.
या बाइंड करवा के लेकर आए अभी लूज पेपर नहीं, आप अपनी फाइल पूरी बना के लाइए, अगर नहीं हो पाएगा तो आप मुझसे ऑनलाइन भी करा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन अप्रूवल भी ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। पूरा बाइंड करवा कर लेकर आए आपके पास, दैट मींस अगर आपका कल नहीं हो पाता है तो आप उसको पीडीएफ बना के आप मुझे मेल कर दीजिए, आई विल गिव यू दी ऑनलाइन अप्रूवल एंड So, sir, मार्क्स। can we I give am you asking is that should we bring the binded file tomorrow or you can check in the loose papers as well? नहीं, आप बिना बाइंड के भी ले आइए, कोई इशू, ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, for online, if I mail the file to you, the PDF file, you will send the approval. Would that be considered? So, यस, तो वो हमें क्या, वो प्रिंट, वो आपका जो अप्रूवल होगा वो उसका वो प्रिंट आउट आपको, लगाना। वो आप, हाँ, वो आपको प्रिंट निकाल के अपनी फाइल में लगाना है। ठीक है सर। तो अभी वो स्कूल की स्टैम्प वगैरह तो उस पर नहीं होगी? नहीं, तो वो आपको चाहिए, वो सब चाहिए ना, वो तो बिना उसके थोड़ी होगा। नहीं नहीं, जैसे कि जो आपके और उसमें आपके जो एजेंसी सुपरवाइजर उनके मार्क्स भी होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ही होगा, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ही होगा। ओके सर, ओके, सो वी कैन डू इट इन 1 or 2 weeks, राइट? हाँ हाँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी पूरी कंप्लीट फाइल ही मेरे पास लाएंगे तभी आपका चेक होगा, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ फॉर्म ले आए और उसमें साइन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, जैसे केसेस जो लिखे हुए हैं वो सारा प्रॉपर कंप्लीट हाँ, करके दे। सर जब हम फाइल लेके आएंगे तो हमारा वाइवा भी होगा उस टाइम? हाँ, आपका वाइवा होगा ना बाद में इंटर्नशिप का। बाद में होगा जब साइन करवाने आएंगे? नहीं, बाद में आपका वाइवा होगा ना, इंटर्नशिप का तो वाइवा है आपका। ओके सर। यस कविता। सर मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई मैं जॉब के कारण, तो मैं प्रैक्टिकल फाइल कैसे सबमिट कर पाऊंगी? प्रैक्टिकल फाइल आप एक बार आरसी में पता कर लो, प्रैक्टिकल फाइल तो वहीं सबमिट होंगी ना, ऑनलाइन सबमिट होंगी, प्रैक्टिकल फाइल मेरे पास सबमिट नहीं होगा, वहीं मैं चेक करूंगा। सर बट मैंने वो क्या कहते हैं क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी, जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है ना वो नहीं ज्वाइन कर पाई थी मैं।